Hi everybody, welcome back to another video of Introduction to JavaScript. And since you can read the title, it's Data Types and Variables Part 3. So you thought we're done with variables, right? We are just getting started. अभी आगे हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी देखेंगे जिसमें आप मज़ीद वो तमाम सिनेरियोज देखेंगे जो जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं और जहाँ पे जावास्क्रिप्ट रियली बिहेव्स फनी सो विल डिग इन टू दोज इज़ वेल आपको ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा उससे कि व्हाट हैपन्स when you're dealing with variables and scope and hoisting. So काफ़ी interesting scenarios हैं. So for now in this lesson we'll be talking about type checking. So we know that JavaScript is a dynamically typed language और जितनी टाइप चेकिंग है वो रन टाइम पे होती है. बट वॉट इफ़ हम किसी ऐसे सिनेरियो में फंस जाते हैं जहाँ पे डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वी हैव टू चेक द डेटा टाइप्स or a particular type of a variable, or we have to compare a type with another type. So how we can do that? So JavaScript offers a type of keyword. So let's see how we can use that. To use type of, you just have to type in type of, let's say since I only have these two set of variables, so let's use the variable a. Okay, so if I sign in type of a, I get a string. So अगर मैं a की टाइप चेंज करके कोई इंटीजर दे दूँ तो I'll get a number. And if I type in a boolean, I get a boolean. So this is how you can check the types of particular variables and how you can use it within your scripts. और इसमें भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सिनेरियोज हैं लेकिन वो सिनेरियोज मैंने सेव करके रखे हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए. सो पीपल हु आर वाचिंग इट डोंट मिस द प्रैक्टिस क्वेश्चंस. You will find those worth it, right? So that's it for this lesson. I'll see you in the next one.